A very good morning to all my dear students. Hope all of you are staying safe at home. Last time we started the chapter of terms and concepts in sociology. So we did about various groups, primary and secondary groups, and social groups. The next one we are going to start is social stratification. This stratification term might be new for you. So let's read it out. What is it? Social stratification can be defined as existence of structured inequalities between groups in society in terms of their access to material or symbolic awards, which individuals and groups are ranked in more or less during enduring hierarchy of status, that is stratification. Stratification basically इसका मतलब ये है कि जब आप अलग अलग ग्रुप्स को डिफरेंट स्ट्राटाज में या डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं किसी भी बेस पे, किसी भी क्राइटेरिया पे, चाहे वो इनइक्वालिटी के ऊपर ही क्यों ना बेस्ड हो, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, रिच, पुअर, मतलब आपने एक अलग अलग स्ट्राटा में डिवाइड कर दिया है उनको, सोसाइटी को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक हायरार्की मेंटेन कर दी है. So it has a crucial place in the organization. Every aspect of life, every individual household is affected by this stratification. चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशनल के इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें, वर्क प्लेस की बात करें, या हम पॉलिटिकली की बात करें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें, हर चीज़ में स्ट्रैटिफिकेशन ज़रूरी ही होती ही है. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें, ऑल आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सिस्टमैटिक वेज. रिच आर गिवन मोर प्रेफरेंस, पुअर आर नॉट गिवन प्रेफरेंस, रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड ऑल, मतलब हर फील्ड में आप देखो स्ट्रैटिफिकेशन इज देयर. So that means when the society is grouped and divided into different stratas or groups, that is social stratification. Next comes the forms of the social stratification. किस किस तरह में ये social stratification possible है? First है slavery. Slavery, although if we talk about the present times, this system is not existing, right? But if we talk about the previous times, it was an inequality where some individuals were literally, they were owned by the others. Like if we see, the Greeks and Romans kept slaves as soldiers. They were kept as servants. They were kept as laborers, the civil servants. So slave armies were kept by the Egyptians as well. लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें, सो दिस सिस्टम हैज़ बीन इरेडिकेटेड, राइट? अभी वी डोंट फाइंड सच सिस्टम ऑफ स्लेवरी एनीवेयर, बट द सिस्टम्स विच वी स्टिल फाइंड बेस्ड ऑन स्ट्रैटिफिकेशन इज कास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. योर सोशल पोजिशन इज डिटर्मिन्ड बाय द कास्ट यू आर बॉर्न इन. अब ये तो आप मानते हैं दैट यू कैनॉट चेंज योर कास्ट. Caste dictates the type of work an individual can do and doesn't allow occupational mobility. एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, अनटचेबिलिटी की अगर हम बात करें, राइट? लाइक द रिच पीपल, द लैंडलॉर्ड्स, दे यूज्ड टू ट्रीट द लोअर कास्ट पीपल एज अनटचेबल्स, सो दैट वाज स्ट्रैटिफिकेशन. कास्ट एंडोगेमी इज प्रैक्टिस्ड विद रिगार्ड टू मैरिजेस. इंटरकास्ट मैरिजेस की बात करें, एन इंडिविजुअल कैन मैरी ओनली विद इन हिज और हर ओन कास्ट. ये भी देखा जाता था कि अपनी ही कास्ट में द वन पर्सन शुड गेट मैरिड. He cannot marry out of the caste. That was exogamy practice. So that was not adopted. Only endogamy practice. अब अपनी ही caste में you can get married. Then caste determines one's social relationship. Social interaction is restricted by caste. एक रिलीजन का पर्सन दूसरे रिलीजन के पर्सन से बात नहीं कर सकता, हिंदू मुसलमान से बात नहीं कर सकता. So that was based on this social interaction. Then there is restriction in terms of food and food sharing. जैसे सोशल इंटरेक्शन की बात है, वैसे ही फूड शेयरिंग की बात है. लाइक द पीपल ऑफ वन कास्ट कैनॉट शेयर देयर फूड विद द पीपल ऑफ द अदर कास्ट. सो दैट वाज सो मच सिस्टम ऑफ कास्ट दैट वाज बेस्ड ऑन द स्ट्रैटिफिकेशन, डिफरेंट स्ट्राटाज. कि एक कास्ट में ग्रुप में डिवाइड हो गया, दूसरे कास्ट में ग्रुप में डिवाइड हो गया, एंड दे वर नॉट अलाउड रादर टू इंटरैक्ट, नॉट टू शेयर फूड. सो दिस वाज द सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, वन ऑफ द सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. नेक्स्ट, कास्ट के बाद जो एक और स्ट्रैटिफिकेशन का सिस्टम था, दैट वाज योर क्लास. अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास. सो क्लास सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन 4 एस्पेक्ट्स. द फर्स्ट वन इज द बाउंड्रीज बिटवीन क्लास ग्रुप्स इज नॉट एज क्लियर कट एज इन द कास्ट सिस्टम. कई बार हमें नहीं पता चलता कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू अपर कास्ट, मिडिल क्लास, लोअर कास्ट, कि हमें किस क्लास के लोगों से बात करनी है, किस क्लास के, मतलब
Actually, we should talk to each and every person, whether he belongs to whichsoever class. लेकिन हमारी सोसाइटी में ये ट्रेंड बना दिया गया है अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास का. सेकेंडली, क्लास स्टेटस कैन बी अचीव्ड एंड इज़ नॉट एस्क्राइब्ड. मैंने आपको बताया था अचीव स्टेटस वो होता है जो आप अपने हार्डवर्क से अचीव करते हो. एस्क्राइब इज़ द वन विच यू अचीव बाय बर्थ. एस्क्राइब स्टेटस कांट बी चेंज्ड, बट यू कैन चेंज योर अचीव स्टेटस. क्लास स्टेटस कैन बी अचीव्ड. आप अपने हार्डवर्क से वो क्लास, वो पोजिशन, you can gain that position. Even if one person belongs to lower caste, with his achievement he can just close up the mouth of each and every other person, and he can achieve high status in the society. The class stratification is mainly based on inequalities with regard to possession of economic resources. जिसके पास ज़्यादा economic resources हैं, जो ज़्यादा powerful है, वो ज़्यादा rich है और उसी को ज़्यादा preference दी जाती है. If we talk about the class stratification, this was the third one. And if we see that the process of the inequality operates through large-scale impersonal association of members. That means inequality इसमें भी आती है, like अगर एक इंसान के, एक person के माइंड में ये सेट कर दिया जाए कि you are so rich and you belong to so and so class and you should not interact with the other people जो lower class को belong करते हैं, so that means that is a brainwashing of the person. So large scale impersonal association of members, if you are not interactive, you don't share bonding with other people, that means you believe in the system of class stratification. Next comes status and role. Status क्या होता है? Status is a position जो एक person occupies in a group or a society. Like my status is I am a teacher. So status can be a doctor, a mother, a teacher, a housewife. There can be any status. That is your profession, related to your profession, which you have achieved through your hard work. As I've told you previously, there can be achieved status or ascribed status. Achieved, which you achieved by your effort, your hard work, and ascribed, which you gain by birth. Then achieved status is based on individual choice. मैं teacher बनना चाहती हूँ, मैं doctor बनना चाहती हूँ, that's my choice. But in ascribed status, you don't have any choice. Then in achieved status, it can change qualifications, income. Day by day, you can progress and you can improve your salary, you can improve your income. But in ascribed status, it's difficult to change the status. जो by birth आपको status मिला, you can't change that. Achieved status plays an important role in modern societies because this status you gain by your effort. आप एक class maintain कर लेते हो कि आपने अपने hard work से इतना कुछ achieve किया है, and you gain an important place in the society. But ascribed status also plays an important role in traditional societies जहाँ पे caste को ज़्यादा preference दी जाती है. अगर हम बात करें अचीव स्टेटस की, वहाँ पे क्लास को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. क्लास इज़ एन एग्जांपल ऑफ अचीव स्टेटस. बात करें एस्क्राइब स्टेटस की, तो कास्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एस्क्राइब स्टेटस विच यू गेन बाय बर्थ. नेक्स्ट कम्स मल्टीपल स्टेटस एंड स्टेटस प्रोग्रेशन. अब एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में एन इंडिविजुअल में ऑक्यूपाई मल्टीपल स्टेटसेस. नाउ यू विल से व्हाट आर मल्टीपल स्टेटसेस. Like when you go to school, you are a school student. When you visit a market, you are a customer. When you travel by bus or a train, you are a passenger. When you are with your friends, then you are friends to each other. When you go home, you play with your sister, you are like brothers and sisters. When you go to visit a doctor, then you are a patient to a doctor. So you have multiple statuses in the society. That means there is a sequence of statuses in the society. And for example, when you are born, you are a son to a father. When you grow up, you yourself become a father. That means a son becomes a father, then he becomes a grandfather, and then a great grandfather, and so on. मतलब आप पूरी अपनी लाइफ में एक स्टेटस सीक्वेंस को इंजॉय करते हो, आप अपने एक स्टेटस को मेंटेन करते हो, रेफर करते हो, विच इज़ अटेन इन द सक्सेशन और सीक्वेंस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ. If we talk about status and prestige, they are also interconnected. Every status is accorded certain rights and values. हर एक social position में एक person के साथ एक value attach होती है, who occupy it on the basis of his or her performance. So that kind of value which is attached to the status of a person, that is his prestige. And if anything goes against his value, that means his prestige is hurt because that value is an emotion to him and that is very much attached to him. So the kind of value attached to the status or to the office or to the profession, that is called a prestige. So that's all for the today. The assignment related to the videos have been uploaded on the website. Hope you have understood this chapter till here. In the next class, we'll proceed on further.
Thank you and take care of yourself.